All right, so we already discussed the performance measures for regression problems before and classification problems. And in the last class, we started with performance measures for ranking problems as well. So first of all, let me remind you of what ranking problems are. So essentially, ranking problems में आप कर क्या रहे होते हैं? आप एक सिंगल आउटकम प्रिडिक्ट नहीं करते, आप ये करना चाह रहे होते हैं कि आप अपने रिजल्ट्स को रैंक करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ having a particular of being from a particular class. So the example that I gave you last time was of tax filing. So let's say in Pakistan, FBR receives hundreds of thousands of tax returns every year, and they cannot really verify each of them separately to basically check के किसी ने कोई हर किसी ने टैक्स फाइल जो है वो सही तरह से किया है नहीं किया, is anybody hiding their income, or are is anybody trying to do tax fraud in that in any sense. So they do not have the resources to verify everything. Of course, it costs a lot because you need resources for that to be able to verify each of those cases, and of course it takes a lot of time as well. तो आपको क्या करना होता है, आपको sample करना होता है from all those tax records, and you have to select a certain number from them to check के आपके जो है वो टैक्स फ्रॉड्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और आपने बेसिकली कैच करना होता है उन लोगों को who are most likely to be hiding their income. Now, one way would be to just do it randomly. Now, of course, if you do not have any better way to do it, that will be the last choice कि आप बस randomly जो है जितनी भी आपके पास capacity है, let's say you can verify 10,000 people, so you could just select 10,000 people randomly from the whole 100 whole, let's say 500,000 people. आप उसमें से 10,000 randomly select कर लें और उनको जो है verify कर लें कि whether they are filing their taxes correctly or not. ठीक है? That's one way of doing this. That's in case if you do not have any better information. But using machine learning, what you can do is you can predict whether a person is likely to be filing a fraudulent tax claim or not. ठीक है, आप एक तरह जिस तरह क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में करते हैं, आप प्रिडिक्शन करते हैं कि अच्छा whether the person whether a person whether an observation belongs to a particular class or not. So इसको आप एक इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि आप कहें कि based on a lot of different variables. So, for example, based on a person's past history, so let's say वो कितनी देर से tax file कर रहा है, whether the person is a salaried person or a non-salaried person, whether what is the income level of that person, maybe which industry they're working in. So they could have all this information, and based on this, they could come up with some sort of a prediction model that predicts whether person is likely to be filing a fraudulent claim or not. Okay, so let's say you receive 500,000 tax returns in a year. अब इसके ऊपर आप जो है एक prediction एक machine learning model train करते हैं, and it turns out that uh, your model is predicting about 40,000 of those tax files to be fraudulent. ठीक है, so out of 500,000 your model is predicting कि 40,000 जो हैं वो उनकी probability है fraudulent claims होने की. लेकिन problem ये है कि you do not have the capacity to verify 40,000 people. ठीक है, ये 40,000 आपके लिमिट से बहुत ज्यादा है, आप सबको उन सबको भी verify नहीं कर सकते. तो आप क्या करते हो? Whenever you're working with classification problems, if you can see my screen, your results generally look like this. So I'm going to hide this class for now. So let's say यहाँ पे ये मेरी actual information है. So this is the past data. तो मेरे पास past में information होगी. So let's say मैंने एक दफा मैंने 15 लोगों को टेस्ट किया. So let me add another one here. So let's say मैंने 15 लोगों को टेस्ट किया, उनमें से
3 जो है वो एक्चुअल फ्रॉडलेंट केसेस थे और 12 जो थे वो फ्रॉडलेंट नहीं थे. Now, based on past information, I come up with some sort of a prediction model. So let's say मेरे पास कोई और training data था, उसके बाद मैंने train किया, ये मेरा validation set है, validation set के अंदर I have 3 fraudulent claims here, 1, 2, 3, and this is what my prediction, my machine learning model is predicting. So इसको वो correctly identify कर रहा है यहाँ पे, and then इसको नहीं कर रहा, किसी और को by mistake वो yes कह रहा है और यहाँ पे इसको correctly identify कर रहा है. Let me add another yes here. Let's say last वाले को yes yes कर देते हैं. Let's say this is also correct. ठीक है? So this is what my machine learning model could do. कि वो classify कर देगा based on past records different classes में. तो ये fraudulent claim हो सकता है या नहीं हो सकता. Now, ranking problem में क्या होता है? Whenever you are training a classification model, आप R में करते हैं, Python में करते हैं, you do it in any other language. Classification machine learning models, they also give you a probability. So, probability का क्या मतलब है? So, if you look at this next column, यहाँ पे मैंने कुछ probabilities यहाँ पे assign की हैं. So, let me add this as well. So, for every record जो आपका मॉडल होता है, it also comes up with some sort of a probability of being from a particular class. So let's say इस machine learning model के अंदर ये जो classes predict हुई हैं, ये इन probabilities की base पर उसने की हैं. So for the first record, my model told me that there's a 30% chance of this being a fraudulent claim. अब 30% क्योंकि 50% से कम है, उसने क्लास उसको असाइन कर दी नो, बिकॉज देयर इज अ 30% चांस ऑफ बीइंग यस एंड देयर इज अ 70% चांस ऑफ बीइंग नो. सो नो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसने इसको नो असाइन कर दिया. फॉर द सेकंड record here, for the second person here, the probability that my model is predicting is 80%. So 80% yes का chance है, 20% no का chance है, तो यहाँ पे उसने yes assign कर दिया. So this is how the model actually works behind the scenes. तो वो एक probability assign करता है. If and whatever class has the highest probability, यहाँ पे तो of course binary outcomes है. अगर आपके पास 2 से ज्यादा classes भी होती, तो वो हर एक class को एक probability assign करता है. And whichever class, whichever category has the highest probability, वो category उस observation को या उस record को assign कर देता है. This is how it works. Now ranking, इसी problem को अगर आप ranking में convert करें, तो वो क्या होगा? It's going to look something like this. So instead of just predicting these classes, अब आप इसको, अगर आपने let's say आप सिर्फ 2 लोगों को आप इनमें से very small sample, right? We have 15 people. So अगर आप इस ratio पे देखें, so let's say out of 150,000 people, we can test around 20,000. Even this is a very high number, but let's just assume कि इसमें से आपको top 2 जो है ना, वो आप सिर्फ जो है उनको आप verify कर सकते हैं. So how would you go about it? जो ये probabilities हैं, इनको आप sort कर लेंगे in a decreasing order. So यहाँ पे मैं sort कर देता हूँ, sort largest to smallest. तो अब मेरा model जो मुझे बता रहा है, my model is telling me कि this person has 88% chance of filing a fraudulent claim. ठीक है? This person here has an 80% chance of filing a fraudulent claim. अब जो top 2, let's say मेरे पास जो claims है, मैं इनको verify करता हूँ because that's what my resources allow. तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ इन 2 लोगों को जाके verify करूँगा. And it turns out that both of them actually were filing a fraudulent claim. ठीक है? तो अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा की capacity होती, I could choose let's say a higher number. मैं 3 को test verify कर सकता था. If I had even more resources, तो मैं इसी जो मेरी prediction model है, इसी की base पर I would go down further, और मैं
लेट्स से 4-5 लोगों को सेलेक्ट कर लेता। ना यू सी जो जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऊपर, वहां पे एरर्स के चांसेस कम होंगे, बिकॉज अगर आपका मॉडल कह रहे हैं 88% चांस ऑफ बीइंग यस, तो एरर का चांस इज रिलेटिवली लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग यस। अब इसमें इस केस में माय मॉडल वाज टेलिंग मी देयर इज अ 58% चांस ऑफ यस एंड अ 42% चांस ऑफ नो, तो मैंने इसको यस असाइन किया बिकॉज 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्योंकि ये the model is not very sure about it, there's a high chance of error here, and it turns out in this class this observation was actually a no। ठीक है, तो यहाँ पे errors भी हो सकते हैं। जो आपका चौथा yes था, my model is not able to capture that at all, वो इसको no assign करे, उसकी probability भी बहुत low assign करे, and this could be for any particular reason। तो ये आपका, इसको आप फिर भी कैच नहीं कर पा रहे। सो रैंकिंग प्रॉब्लम्स में आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज पर रैंक कर देते हैं, एंड देन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड यू फिगर आउट कि आपने उसमें से कितने सही क्लासिफाई कर लिए। So this is what ranking problems are about. Any questions on this? Does this make sense? इस पर कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई होप इट मेक्स सम सेंस। अब यहाँ पे देखते हैं हम इस तरह की प्रॉब्लम्स में परफॉर्मेंस को कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव इफ यू हैव रैंकिंग प्रॉब्लम्स लाइक दिस, इसमें आप कैसे जो है अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं या मॉडल्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। सो व्हाट यू डू इन दिस केस इज यू फर्स्ट sort the validation records by decreasing propensity. Propensity is similar to probability. So estimated probability of belonging to the important yes class. So that's what we did there. हमने उसको sort कर लिया in terms of decreasing probability of yes here. ठीक है, हमने sort कर लिया. Now the second step would be that for each validation record आप क्या करते हैं, यू प्लॉट अ पॉइंट। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, इसका आप एक चार्ट बनाते हैं। सो हाउ डू यू गेट पॉइंट्स ऑन दैट चार्ट? आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे यू गोइंग टू हैव नंबर्स लाइक दिस, कि नंबर ऑफ important record। so यहाँ पे important is the yes class for us, के आपकी जो है वो fraudulent claim है या नहीं है, that is the important class here। ठीक है, तो यहाँ पे आप x axis के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आप के पास सॉरी x axis के ऊपर आपके पास सारे number of all records, तो ये आपके पास for every record आपके पास यहाँ पे values होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on। तो इस केस के अंदर हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज थी, 15 वैल्यूज थी। इस एक्सेल फाइल के अंदर वी हैव 15 वैल्यूज। तो द टोटल नंबर हियर ऑन दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 15 हियर एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे क्या होएगा, वाई एक्सिस पे वी विल बी लुकिंग एट द एक्चुअल fraudulent cases। so इस केस के अंदर we have a total of 4 fraudulent cases। तो यहाँ पे आप जा रहे होंगे from 0 1 2 3 4। तो y axis पे you're going to have values from 0 to 4, x axis पे you're going to have values from 0 to 15। now we have 3 curves shown here। ठीक है, ये जो सबसे फर्स्ट कर्व है जो रेड वाली लाइन है, this red line is the perfect classifier। perfect classifier क्या करेगा, perfect classifier ऐसा होएगा, so let me show you how it's going to look like। so perfect classifier is going to be like this, कि वो सारी क्लासेस को एग्जैक्टली करेक्ट जो है वो क्लासिफाई कर रहा होगा। तो अगर आप इसके ऊपर रैंक करेंगे, तो इसके ऊपर रैंक करने का क्या मतलब होएगा,
इसके ऊपर रैंक करने का मतलब ये होगा you're going to have all yes values first. तो आपके पास ये चारों yes first आ जाएंगे, तो आप लेट्स से आप ऊपर से स्टार्ट करते तो फर्स्ट 4 केसेस ही आपको मिल जाते जो फ्रॉडलेंट केसेस थे, उसके बाद सारे जो है वो फ्रॉडलेंट केसेस नहीं थे. सो परफेक्ट क्लासिफायर इज ऑलवेज गोइंग टू प्रिडिक्ट एवरी क्लास एक्यूरेटली. ठीक है, तो उसमें जब आप रैंक करेंगे, द इंपॉर्टेंट क्लास is always going to come first. सारी important classes first पहले आ जाएंगी और सारी जो बाकी classes हैं वो उसके बाद आएंगी. तो ranking problem में जब perfect classifier होगा, तो what it's going to do is it's going to be predicting all of these observations exactly correctly. So first observation मिली, उसने उसको correctly identify कर लिया. Second observation मिली, उसने उसको second correctly identify कर लिया. Third observation को भी correctly कर लिया. Fourth को भी correctly कर लिया. उसके बाद fourth से लेकर 15th तक there is no yes class. तो वहां पे फिर y axis पे आप इससे ऊपर नहीं जा सकते. So you just stop there and you don't go beyond that. ठीक है, so y axis पे we have the number of yes records, और यहाँ पे we have all records. तो यहाँ पे 0 से 15 तक values हैं x axis पे, y axis पे we have values from 0 to 4. तो perfect classifier ने first 4 values में आपकी सारी correctly identify कर ली. Then there's a random classifier. Random classifier क्या करेगा, जो हमने दूसरी example की थी कि we are not able to predict intelligently at all, और हम क्या करते हैं, हम randomly values assign कर देते हैं based on the total probability of having correct record. So basically आप क्या करेंगे, आपके पास 4 out of 15 values क्या हैं आपके पास. Let's say in the training data you have 4 values that are yes, and you have the rest 11 values that are no. तो आप देखेंगे probability क्या है of being a yes class, that's 4 over 15. ठीक है, 4 over 15 probability of being a yes class. तो आप randomly assign कर देंगे हर एक observation को कोई भी class, तो वो क्या करेगा, वो आपके पास ये इस तरह की slope बन जाएगी कि start से लेकर end तक it's going to be a straight line like this, because इसमें क्या हो रहा है, आप randomly classify कर रहे हैं. आप जो है जो important class है, अगर वो आप बेहतर classify कर सकते using something intelligent, तो वो हमेशा इस line के ऊपर लाया करता, because this is just like assigning values बिल्कुल randomly, because it's a straight line going from 0 to this point here. जो आपका क्लासिफायर होगा, that's a typical classifier जो आप कोई भी machine learning model train करके build कर रहे होंगे, that's going to lie somewhere in the middle of these two lines. So एक random classifier की ये straight line है, जो perfect classifier है वो सारी values correctly predict कर रहा है from start to here. जो typical machine learning classifier होगा, that's going to lie somewhere between these two curves. So आपके perfect classifier और random classifier के दरमियान में कोई line यहाँ पे इस तरह से आएगी. Now, the closer it is to the upper curve here, the better your classifier is going to be. The closer it is to this random classifier, the worse your classifier is going to be. So आप इस तरह का चार्ट बनाते हैं बेसिकली. आपके पास इसमें रैंकिंग प्रॉब्लम्स में आपके पास डायरेक्ट कमांड्स होंगी ये बिल्ड करने के लिए. इट्स कॉल्ड लिफ्ट चार्ट. सो रैंकिंग प्रॉब्लम्स के लिए आप इस तरह का लिफ्ट चार्ट बनाते हैं जहाँ पे यू हैव अ परफेक्ट क्लासिफायर, यू हैव अ रैंडम क्लासिफायर, और उसके दरमियान में आपके पास आपका क्लासिफायर होता है, एंड यू ट्राई टू सी कि ये कितना करीब है to the perfect classifier और कितना दूर है from the random classifier. I hope it makes some sense. If you have any questions, please let me know here. Yes. Sir, ये इस पहले तो there are some questions in the chart के how exactly does ranking help us? How exactly does ranking help us? अच्छा. So why we are doing it? अच्छा, so let me repeat the example where we started from. So देखिए हमारे पास
ये information है, it's probably not as intuitive from this because हमारे पास a number of records बहुत कम है यहाँ पे. Let me do this कि मैं इसको ना थोड़ा सा copy करता हूँ नीचे and let me increase the sample size. Okay, so now I have 90 values there. Okay, so I've got 90 observations. ठीक है, 90 observations में ये मेरे पास वैलिडेशन records है. मैंने एक prediction model बना लिया अपना, classifier बना लिया. अब मैं वैलिडेशन सेट के ऊपर टेस्ट कर रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस. ठीक है, ये मेरी एक्चुअल क्लासेस हैं जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी फ्रॉम पास्ट डेटा. देन आई हैव सम predicted classes based on my model. जो मैंने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया है वो ये predictions कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, now let me see कि वो कितने जो है वो yes predictions कर रहा है यहाँ पे. So out of the 90 observations, I'm getting 24 yes values here. So 24 values ऐसी हैं out of 90 जिनको यहाँ पे yes classify किया हुआ है उसने. ठीक है, but now let's say the problem is आपके पास capacity नहीं है to verify all of these 24 tax files. तो आपके पास आपका मॉडल क्या बता रहे हैं? मॉडल आपको बता रहे हैं कि इन 24 लोगों के fraudulent tax फाइल होने का चांस है. But the problem is you cannot verify all 24 of them. So how do you choose which one of these should you verify? उसके लिए आप क्या करते हैं? आप इसके अंदर इनकी probabilities के ऊपर sort कर देते हैं. Because any model that's going to predict these values as yes, वो आपकी कुछ इस तरह की probabilities भी देता है. उसी की बेस पर उसने एक क्लास असाइन की होती है. आपके पास कोई probability होगी. If this probability is greater than yes, greater than 50%, तो उसको yes assign कर देगा. अगर it's less than 50% तो उसको no assign कर देगा. तो ये मैं इसको इसके ऊपर rank कर लेता हूँ. इसके ऊपर सॉर्ट कर लेता हूं ऑन दीज प्रोबेबिलिटीज. तो अब मैं क्या करूंगा, जो जिन 10 लोगों की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइलिंग अ रॉन्ग क्लेम, अ फ्रॉडुलेंट क्लेम, मैं उन 10 लोगों को जाके टेस्ट करूंगा एंड दैट विल गिव मी द हाईएस्ट चांस ऑफ यूजिंग माय रिसोर्सेज मोस्ट इफेक्टिवली. सो अगर मेरे पास 10 लोगों को जज करने की कैपेसिटी है, 10 लोगों को वेरीफाई करने की कैपेसिटी है, आई वुड वांट कि जो 10 लोग मैं चूज करूं वो सारे वो हों जो जिनकी फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है, because that's going to maximize my revenues in the sense, the government's revenues in that sense, कि उन fraudulent claims को जब वो जो है वो कैप्चर कर लेगी, they will be able to increase their tax revenue in that sense, कि वो सारे अगर जो है वो fraudulent claims होंगे, they'll be able to recover the lost taxes from them. Does this make sense? The reason why we are doing this? Yes, sir. Lekin according to this, if we go towards the chart, which part of the line should I be concerned with? Okay, so ये आपके दो classifiers हैं जो आपकी, एक तो baseline है. Baseline ये है कि मैं without any thinking मैं बस randomly select लेता हूँ. Out of those 90, I just select randomly 10 people. ठीक है, that's your random classifier जो आपका blue line से represented है. ठीक है, ये मेरा base case है कि अगर आप randomly select कर लें तो this is how we are going to perform. एक आपका परफेक्ट केस होगा. परफेक्ट केस क्या होएगा कि आउट ऑफ 90 मेरे पास एक्चुअल में 24 जो हैं वो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं. ठीक है, एक्चुअली 90 में से 24 फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं. परफेक्ट क्लासिफायर क्या करेगा? इट्स गोइंग टू रैंक ऑल 24 ऑफ देम फर्स्ट. सो 24 यस पहले शो कर देगा लाइक दिस. ठीक है, and then after that it's going to show all the no's. Now of course
दिस इज द आइडियल केस कि आप सारे जो है वो फ्रॉडलेंट क्लेम्स को पहले ले आए और बाकी सारे नॉन फ्रॉडलेंट केसेस को बाद में ले जाएं. दिस इज द परफेक्ट केस. ठीक है, बट इन एक्चुअल यू नॉट गोइंग टू बी एबल टू अचीव इट जनरली. तो आप ये आपका मैक्सिमम जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाला केस हो गया कि इससे बेहतर आप नहीं कर सकते. ये आपका परफेक्ट क्लासिफायर हो गया, दिस रेड लाइन. ठीक है, and this black line in the middle is going to be the model that you are training, that you have built, that's going to lie somewhere between these two extremes. एक आपको रैंडम वाली एक्सट्रीम है, एक आपकी परफेक्ट वाली एक्सट्रीम है. इनके दरमियान में आपका कहीं मॉडल आएगा. ठीक है, now the closer this line is to the red line, the better your model is, and the closer this black line is to blue line, your model is not that good. Does that answer your question, Asad? Sir, I get that part. Lekin the point of my question was that this chart incorporates all of the records, right? Or iski jo left side hai, that has more number of important records according to a perfect classifier, right? तो अगर मैं typical classifier की बात कर रहा हूँ तो how exactly am I reading this line? What is this telling? Acha, let me try this if I can do it here. I get that it will lie in between the perfect and the random classifier. Like in this pattern, how exactly am I reading it? That's what I'm asking. Okay. So let me try to write down some numbers here. They're not going to be very pretty, but so let's say we have a 0 here. I have a 1 here. Then I have, let's say, a 2 here. अभी of course ये graph उस problem के लिए नहीं है, तो आप उस तरह से accurate नहीं है, but let's just try to understand this कि आपकी जो है ये values हैं 1, 2, 3 here, and then you have 4 here. ठीक है, इस side के ऊपर again you have 0 here, you have 1 here, you have 2 here, you have 3 here, you have 4 here, and then you're going all the way, let's say, until 15. ये आपको फर्स्ट वाला केस बता रहा हूँ जहां पे मैंने 15 वैल्यूज ली थी और उसमें से 4 जो थे वो फ्रॉडलेंट क्लेम्स. ठीक है, नाउ द वे आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस इज, सो सॉरी आई थिंक आई डिड नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल फर्स्ट, तो अब एक दफा दोबारा देख लेते हैं. तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस के फर्स्ट वैल्यू मैं देखूंगा जाके इन माय एक्सेल शीट. अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूं पहले, सो ये मेरा क्लासिफायर है. अच्छा, तो चल परफेक्ट क्लासिफायर को देख लेते हैं. ठीक है, परफेक्ट क्लासिफायर फर्स्ट वैल्यू, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो मूव करता जा रहा हूँ. सो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 2 के ऊपर आएगा, थर्ड पॉइंट इसके ऊपर आएगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. सो फर्स्ट पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? अगर तो वो yes है तो इट्स गोइंग टू बी 1. अगर मैं सही क्लासिफाई कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स परफेक्ट क्लासिफायर में फर्स्ट को उसने सही 1 क्लासिफाई कर लिया, तो मेरा ये फर्स्ट पॉइंट आ गया. परफेक्ट क्लासिफायर में वो सेकंड को भी yes क्लासिफाई करेगा बिकॉज टोटल 4 yes है मेरे पास, तो सेकंड भी yes क्लासिफाई करेगा परफेक्ट क्लासिफायर. ये मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पे समवेयर हियर. थर्ड वैल्यू को भी वो yes क्लासिफाई करेगा, ये मेरे पास थर्ड पॉइंट आ गया. फोर्थ को भी yes क्लासिफाई करेगा बिकॉज इट्स अ परफेक्ट क्लासिफायर, इट्स गोइंग टू गिव मी ऑल द yes एट द टॉप एंड देन ऑल द नोज आफ्टर दैट. तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट आ गया यहाँ. ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट पे आपका देयर इज नो अदर yes, क्योंकि yes मेरे पास 4 ही थे, वो ऑलरेडी वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट. तो 4 के बाद फिफ्थ वैल्यू के ऊपर नंबर ऑफ yeses आर स्टिल 4, तो मैं यहीं पे रहूंगा. सिक्स्थ के ऊपर नंबर ऑफ yeses आर स्टिल 4. सेवेंथ ऑब्जर्वेशन पे जाके भी नंबर ऑफ yeses आर स्टिल 4, एंड सो ऑन. आई कैन जस्ट एक्सट्रापोलेट दिस लाइन लाइक दिस. तो यहां तक ये मेरी स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगी विद दिस स्लोप, एंड देन आई हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. परफेक्ट क्लासिफायर का केस समझ आ गया? इसमें क्या प्रॉब्लम? No sir. अच्छा, अब रैंडम क्लासिफायर
जनरली अगर आपके पास ये डेटा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, सो रैंडम क्लासिफायर एसेंशियली कर क्या रहा है, इट्स प्रिडिक्टिंग वन ऑफ दोज टू क्लासेस रैंडमली, ठीक है। सो वो पहली वाली का yes होने की प्रोबेबिलिटी लेट्स से 4/15, नेक्स्ट वाले की yes होने की प्रोबेबिलिटी इज 4/15, थर्ड की नेक्स्ट yes होने की प्रोबेबिलिटी 4/15 एंड सो ऑन। तो जो ये लाइन है ना, इसकी स्लोप इज, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 4/15। so आप 0 0 को ज्वाइन कर देंगे with the last point here, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। so the number of important classes in your data divided by number of all records, ये आपकी स्लोप होगी इस लाइन की, जो आपकी ये रैंडम क्लासिफायर वाली लाइन है। so basically 0 0 वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया with the last point here, this is your base case का randomly assign कर देते, ठीक है। Now a typical classifier, typical का मतलब ये है कि जो भी आप कोई भी मॉडल आप बिल्ड करेंगे खुद से, that's going to be between a random classifier, because random classifier was the most simple one कि आपने बस randomly assign कर दिया, and the perfect classifier is the best case। आपका मॉडल जो होगा it's going to lie somewhere in between them। तो वो उसमें क्या होगा, let's say first value यहाँ पर आई, तो उसको आप, वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही थी, इस केस के अंदर इट वाज टर्निंग आउट टू बी, मेरे वाले केस में देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा मॉडल था। in fact let me change it again, 15 वाला केस देखते हैं वापस। अच्छा, दिस वाज माय इनिशियल केस जहाँ पे मेरे पास 15 वैल्यूज थी। इसमें मैं अपने क्लासिफायर के ऊपर सॉर्ट करता हूँ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ द फर्स्ट वैल्यू दैट आई एम प्रेडिक्टिंग, ये yes है, और यहाँ पे मैं जाके जब प्लॉट करूंगा, सो 1 के ऊपर 1 पॉइंट मेरा यहाँ पे, अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स दिस कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो अगर मैं इसको उस तरह से प्लॉट करूं तो इट माइट लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, सो 1 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 1 ही रहेगी यहाँ पे इस केस के अंदर, बिकॉज फर्स्ट केस के अंदर आई एम गेटिंग 1 हियर, ठीक है। सेकेंड केस के अंदर सेकेंड पॉइंट के ऊपर आई एम अगेन गेटिंग अ yes here, तो सेकेंड पॉइंट भी क्या होगा, 2 के ऊपर मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक उस वाली लाइन, वो वाली लाइन जो है वो ओवरलैप करेगी मेरे इसके साथ, रेड वाली लाइन के साथ। थर्ड पॉइंट पे भी क्या है, प्रिडिक्टेड इज yes, एक्चुअल इज yes, तो थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन इसके बाद अगर मैं देखूं इसके ऊपर, फोर्थ जो प्रिडिक्शन है मेरी वो भी yes है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्लास क्या है, दैट इज अ नो। तो यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे माई कर्व इज गोइंग टू फ्लैटन आउट लाइक दिस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी हियर कि फोर्थ पॉइंट के ऊपर यहाँ पे फोर्थ वैल्यू पे जाके द नंबर ऑफ yeses आर स्टिल 3 हियर। तो यहाँ पे मेरी लाइन जाके डाइवर्ज कर जाएगी परफेक्ट क्लासिफायर से, और ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। so ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे। इसके बाद इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इधर बन जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अच्छा, आई कैन नॉट मेक इट फॉर सम रीजन, बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ वैल्यू पे आई एम गेटिंग अ नो हियर ऑलरेडी, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे इसको आगे ले जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल जाता जाएगा, जहां पे फिर मेरी एक और yes वैल्यू आएगी, वापस ऊपर चला जाएगा। Does that make sense? I'm sorry, it's hard to explain here because I cannot write. I didn't have a way to write right now. उसकी वजह से थोड़ा सा issue हो रहा है, but what I'm going to do now is I'm going to probably refer some sort of an online video to you that might be helpful in this case to understand it better. तो I'll try to do that instead after this. लेकिन आपको जो समझने वाली चीज़ है ना, आपको वो ये है कि आपके पास इस तरह का ग्राफ होएगा, you're going to see from that कि
परफेक्ट क्लासिफायर और रैंडम क्लासिफायर के अंदर आपकी लाइन कहीं पे लाई कर रही होगी. The closer it is to the perfect classifier, the better it is. The closer it is to the random classifier, the model is not going to be as good. Okay, just remember that at least. And for more explanation, I'll try to find out some sort of a video tutorial for this. तो उससे थोड़ा सा शायद आसान हो जाए to understand, because I didn't have a way to write right now. That's causing some issue. Yes. So, sir, the Ajib? purpose of a lift chart is actually to explain the accuracy of the Yes, model. yes. So Okay. it is for understanding performance. कि जितना ये close होगा आपके इसके साथ red line के साथ, उतना आपका अच्छी ranking हुई है आपकी. ठीक हो. That is the purpose. Yes. अच्छा, लेकिन अगर हम सिर्फ स्लोप देख रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप नहीं देख रहे तो रेड लाइन के ज्यादा करीब आते हैं वो कैसे बेहतर हो जाएगा? मतलब अगर ब्लू के भी करीब अगर वो स्लोप्ड होए इसी तरह तो डिफरेंस तो नहीं आएगा मुझे लगता है. डिफरेंस नहीं आएगा वो किस तरह से? सर मैं अगर कह रहा हूँ जैसे ये स्लोप 1 का अगर आप देखें स्लोप ये ऐसे जैसे 0 से 4 तक जा रहा है और फिर हॉरिजॉन्टल हो रहा है. यस. तो अगर उससे पहले एक पिछले रिकॉर्ड भी अगर 3 तक भी हो जाता ही है और फिर फ्लैट हो जाता तो फिर ये ब्लू वाले स्लोप के ज्यादा करीब ना होता? नहीं. सो बेसिकली द आइडिया इज आपने ये कट ऑफ पॉइंट देखना है. ठीक है. सो लेट्स से ये मेरा कट ऑफ पॉइंट है कि 4th वैल्यू तक मेरे सारे सही क्लासिफाई हो जाने चाहिए थे. ठीक है. लेकिन मेरा क्लासिफाई कितने क्लासिफाई कर रहा है सब सही तब तक? सिर्फ 3 क्लासिफाई कर रहा है सब तब तक सही. Yes. ठीक है. Random classifier was somewhere below. Perfect classifier was already classifying all 4 of them correctly. लेकिन मेरा classifier सिर्फ 3 सही आइडेंटिफाई कर रहा है उस वैल्यू तक. आप इस वैल्यू को जनरली कंपेयर कर रहे होते हो उस कट ऑफ पॉइंट को. ठीक है. ठीक है. मतलब वैल्यू 4 तक हम जो उसकी यस आ रहे हैं तब हम कंपेयर कर रहे होंगे. जो आपके एक्चुअल आप नंबर देखेंगे उसमें कितनी आपकी यस ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके एक तरह से कट ऑफ पॉइंट हो जाएगा. आपके परफेक्ट क्लासिफायर तो सारों को सही तरह से कर रहा होगा. आप देखेंगे अच्छा अगर आपके पास एक्चुअल क्लासेस जो थी वो 24 यस थी, उनमें से आपका मॉडल जो है वो 16 सही प्रोडिक्ट कर रहा है, तो आप फिर वो 24 और 16 को कंपेयर कर रहे होंगे कि आउट ऑफ दोस 24 16 आर एक्चुअल यसेस, आपका मॉडल सिर्फ 16 को प्रोडिक्ट कर रहा है. ठीक है. और 8 को जो है वो नो प्रोडिक्ट कर रहे हैं. सो वो आपका फिर वहां पे एरर आ रहा है उस वजह से. ठीक हो गया. ठीक है. अच्छा. नाउ यस जलील. सर रैंकिंग सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए है? रिग्रेशन में भी करते हैं. रिग्रेशन में द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर. रिग्रेशन में इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल again the method of doing that is going to remain exactly the same. उसमें वही जो है आपकी जो है वो रीजनिंग है या वही लॉजिक है. आपका ये परफेक्ट क्लासिफायर है. इन दिस केस इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ कर्व. ये आपका जो है वो रैंडम क्लासिफायर है एंड यू हैव योर मॉडल समवेयर इन द मिडिल. लेकिन आप ये यूज कब करते हैं? फॉर एग्जांपल यू मे वांट टू लेट्स से so let's say you want to do some promotions at your retail store. For example, you have a large store and you have some information about your customer base as well, and what you want to do is based on historical records आप जो है ना अपने highest spenders को जो है वो कुछ promotion send करना चाहते हैं. ठीक है. So based on let's say last 12 months data, what you want to do is you want to send some promotions that cost a lot, as in that have significant costs. आप अपने 100 जो most likely highest spenders होंगे over the next month, उनको आप कुछ promotion send करना चाहते हैं. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? आप अपने customers को जो है वो हर कस्टमर की आप जो है एक प्रिडिक्टेड सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ. उनको सॉर्ट करेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट. जो उनमें से टॉप 100 आ रहे होंगे उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन योर मॉडल कि आपके मॉडल जो है वो कौन से टॉप 100 को जो है प्रिडिक्ट कर रहा है of spending the highest amount.
ठीक है। सो परफेक्ट क्लासिफायर बिल्कुल उसको करेक्टली जो है सॉर्ट कर रहा होगा कि जो एक्चुअल में जो हाईएस्ट 100 स्पेंडर्स थे उसने वो सारे आइडेंटिफाई कर लिए। रैंडम क्लासिफायर बिल्कुल रैंडम वैल्यूज असाइन कर रहा होगा, एंड योर क्लासिफायर मे बी आउट ऑफ दोस 100 it may be able to predict, let's say, some of them correctly, let's say 70 of them correctly out of those 100 highest spenders, and maybe it's not able to predict 30 of them correctly, not correctly, incorrectly. ठीक है, so आपका जो आपका मॉडल होगा that's going to be somewhere in the middle here. ठीक है। Now the only takeaway from this for now is कि आपका एक perfect classifier है, एक आपका random classifier है. Your model is somewhere going to be somewhere in the middle. The closer it is to the red line, the better your model is. The closer it is to the blue line, the worse your model is. ठीक है, and this thing is called a lift chart. Ranking problems में use करते हैं. Yes, Zaleed, you wanted to say something? Yes, sir. Thank you, sir. अगर जो प्रीवियस वाला मॉडल है, अगर इसके अंदर ही हम देखें तो हम अगर मल्टीपल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यूज करते हैं तो फिर वो ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? So यहाँ पे this left chart is going to be made for one class at a time. So यहाँ पे let's say आप yes आपकी important class है. So जो भी आपकी important class होगी ना, आपने एक class identify कर ली कि I'm going to look at this class in particular. तो यहाँ पे मेरे जो fraudulent cases हैं they are the important ones. तो मैं उसके लिए जो है वो ये left chart बनाऊंगा. So अगर आपके पास let's say 4 classes होती हैं, उनमें से एक important class है, तो आप उस इंपॉर्टेंट क्लास को कंसिडर करेंगे, बाकी सबको आप ग्रुप कर सकते हैं एक तरह से अदर कैटेगरी में. एक तरह से वो भी बाइनरी केस बन जाएगा कि आइदर इट्स दैट क्लास और इट्स नॉट दैट क्लास. ठीक है, तो आपको बस दो से ज्यादा क्लासेस भी हैं, उसको भी आप इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं. इट्स वन पर्टिकुलर क्लास दैट यू इम्पोर्टेंट, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्लास, एंड द अदर कैटेगरी इज दैट इट्स नॉट दैट क्लास. तो बाकी तीन को आप उसको ग्रुप कर सकते हैं. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, so there was another very important thing that I wanted to discuss. इसको जो है एक introduction दे देता हूँ, and then we'll start with the quiz quickly. I'm going to answer some of these questions after the quiz because we don't have enough time. अभी मैं chat में देखें कुछ questions वहाँ पे. So I'm going to answer them after the quiz. Let's quickly discuss this single slide first. So remember हम अपने data को 3 different sets में divide करते थे. Training set, validation set and test set. उसके different reasons थी. Validation set was to choose between different models, and test set was to basically estimate future performance. Now let's just consider the training set and validation set for now. कि आप अपने डेटा को 2 सेट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट में. ट्रेनिंग सेट पे आप मॉडल ट्रेन करते हैं और वैलिडेशन सेट पे आप जो है वो चेक करते हैं कि कौन सा मॉडल आपका बेस्ट परफॉर्म करता है. नाउ इन प्रैक्टिस व्हेन यू आर डूइंग दिस, द प्रॉब्लम इज कि आपके पास ये फिगर आउट करना कि आप कितना ट्रेनिंग रखें, कितना वैलिडेशन रखें. it's actually there's no set rule for this. तो आप अगर you could do this कि आप कम ट्रेनिंग डेटा रखें, ज़्यादा वैलिडेशन डेटा रखें. You could do this that you have more training data and you have less validation data. So you have these 2 options, right? Or you could do 50-50. Now what happens in this case when you have when the training data is very little? In this case your model is not going to be very good. Why? Because जिस data पे वो train हो रहा है, that's not enough. ठीक है, बहुत कम data है जिसके पे वो train कर रहे हैं, तो your model is not going to be good enough. इस case के अंदर जहाँ पे आपका training data ज़्यादा है, your model is going to be good enough. लेकिन जब आप different models को compare कर रहे हैं, अब किस डेटा के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं? इस वैलिडेशन डेटा के ऊपर, और वैलिडेशन डेटा इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. तो दिस कंपैरिजन इज नॉट गोइंग टू बी दैट रिलायबल नाउ. सो अगर आप लेट्स से वैलिडेशन डेटा में आपके पास ट्रेनिंग डेटा में आपके पास 9000 वैल्यूज हैं, वैलिडेशन डेटा में आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं. नाउ 1000 रिकॉर्ड्स के ऊपर
आप जब कंपेयर कर रहे होंगे मॉडल्स को एज कंपेयर टू लेट्स से अगर आप इस केस में 6000 के ऊपर कंपेयर कर रहे होते, दिस कंपैरिजन वुड हैव बीन मोर एक्यूरेट, more reliable as compared to this comparison. So the problem is how do you choose the right split? कि आप ट्रेनिंग डेटा में कितना यूज करें, वैलिडेशन डेटा में कितना यूज करें, because there's a trade off here. ठीक है, there's a trade off and that is कि आप ट्रेनिंग डेटा जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना अच्छा आपका मॉडल होगा, जितना आप ज्यादा वैलिडेशन डेटा यूज करेंगे उतनी आपकी जो मॉडल्स का कंपैरिजन है वो उतना रिलायबल होगा. So that's the trade-off that you have. And the second problem is that your choice of selecting a particular percentage can also affect your results at the end. If there's one person who's doing a 70-30 split and there's another person who's doing a 60-40 split, they might be getting different results for both of them. So आपको 60-40 might be giving some other result, and 70-30 might be giving some other results. So how do we choose between the two? इसके लिए हमारे पास एक अप्रोच होती है that is called cross validation. ठीक है, cross validation में हम क्या करते हैं, we basically divide the data into a lot of different parts और हम टर्न बाय टर्न कुछ पार्ट को एज ट्रेनिंग डेटा यूज करते हैं और कुछ पार्ट को एज वैलिडेशन डेटा यूज करते हैं. I'm going to explain this in the next class now because we don't have enough time now. Thank you, Basit. मैं डिस्क्लोज कर दूं. That is brand new information. Not really a secret. मैं वही कह रहा हूँ, सर को ये ना लग रहा है कि पता नहीं है. नहीं, बाद में तो पता चली जाते हैं. अच्छा, ड्यूरिंग का भी तरीका है कोई ढूंढते हैं सर. अब तो ढूंढना पड़ेगा यार, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकती है तो फिर तो नहीं मसला होना चाहिए. हाँ, ये भी है. कोई देखना भी चाहे तो नहीं देख पाएगा. सर यहाँ दिखा सकते मैं ले रहा हूँ दूसरा मॉनिटर. हाँ, ये दूसरे मॉनिटर वाला सॉल्यूशन है. अच्छा, सॉल्यूशन नहीं मतलब ग्लिच. क्या बात है. Okay, so let's say you have a classification problem. अच्छा, highly imbalanced class. आंसर बताओ फिर. So majority class जो है वो 99% of times आ रही है डेटा ट्रेनिंग डेटा के अंदर. अब रिमेम्बर इसमें क्या इश्यू होता है, अगर आप एक क्लास है जो बहुत ज्यादा जो है वो परसेंटेज है, accuracy is not going to be very reliable measure here because आप ये कर सकते हैं कि जो भी वो क्लास है, for example let's say binary है, yes or no, 99% yes है और 1% no है, तो आपका मॉडल एक ऐसा हो सकता है that just predicts everything to be yes. ठीक है, so that's still going to have a 99% accuracy, लेकिन it's not a very good model because वो कोई भी no सही classify नहीं कर रहा. ठीक है, so that's one thing कि आपकी imbalanced classes के अंदर accuracy is not a very suitable measure and you instead have to use either precision and recall or sensitivity and specificity. तो इसमें आपको एक तो 1 था, accuracy is not a suitable measure for imbalanced class problems, and the second thing is precision and recall are suitable for imbalanced class problems. So that's 1 and 3. So 1 and 3. ठीक है. अच्छा, which of the following statements about performance indicators for regression problems is not correct? अच्छा, अब not correct वाले जो है ना, they're very interesting because उसमें सारी फिर options देखनी पड़ती हैं and they require more generally. So we obtain the root mean squared error by dividing the total sum of squared errors. तो आप इसमें formula देख सकते थे, simply you have this formula. अच्छा, भी देखते हैं. होता है क्यों नहीं होता? n से डिवाइड होता तभी तो एवरेज आती है. अच्छा, नहीं, तो सॉरी दूसरा वाला है. अच्छा, you cannot see my screen. नहीं सर. नो सर. तो देख सकते हैं, आ रही है ना? नहीं, सॉरी, PDF फाइल नहीं आ रही. अच्छा, अगर आप देखिए उस फॉर्मूला के अंदर, if you have it with you on your slides,
यू विल सी Yes, sir. आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर वाला फॉर्मूला है उसमें क्या हो रहा है, लेट मी चेंज दिस स्क्रीन शेयर, should be able to see it now. जी सर आ गया। अच्छा देखें वो क्या कहे, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर इज obtained by dividing the total sum of squared errors. So this is sum of squared errors. ये जो सिग्मा ई स्क्वायर है इसका मतलब है स्क्वायर्ड एरर्स का सम, ठीक है। By dividing the total sum of squared errors n by n, so that's what we're doing here, dividing that sum of squared errors by n and then taking the square root, तो उसके बाद ये square root, so exactly वही है, तो that this is correct. We obtain the mean absolute percentage error by dividing the absolute value of the average error. अच्छा, absolute value of the average error. So this is correct. Average error की absolute value. लेकिन divide किससे? By the average outcome. Average outcome का मतलब है कि सारी outcomes को add करके divide by n. That is not correct. आप divide नहीं कर रहे उस outcome से, आप सिर्फ उसको 100% से multiply कर रहे हैं. So this is not correct. ये फॉर्मूला को डिफाइन नहीं मैंने करा सिर्फ सही ये तरह। देखा था लेकिन आपको नंबर ऑफ n माइनस कितनी पॉलिसी है? लेकिन समझ नहीं आई। सर ये वाला कैंसिल कर दें क्विज सर, बहुत मुश्किल था, समझ ही नहीं आया सर क्या हो सही रहा हो गया। देखिए 2 सवालों बाद ही सर मुड़ गए। ये 3 हो गया। मेरा तो सही हुआ है। सर। अभी तो लेकिन आप नीचे के डिवाइड 4 बाय सवाल n, और डिस्कस कर रहे हैं। n ही नहीं है, मतलब यार लेकिन परसेंटेज तो आप 100% डिवाइड तो करके ही नहीं ले है रहे हैं ना। नहीं, आप n से डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे है एवरेज आउटकम से डिवाइड करें, एवरेज आउटकम से तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं सर लेकिन फॉर्मूला में n आप लिखा हुआ है सिर्फ। यहाँ पे। आप यस एक्सप्लेनेशन लेकिन समझना चाहिए। ये तो नहीं लिखा हुआ ना, ये जो है सर एवरेज, आप यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है देख के कि खुश हो एवरेज, जाना इस बार। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज आउटकम कर रहे हैं, एवरेज आउटकम से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ n से डिवाइड कर रहे हैं। एवरेज आउटकम ये है y आपने सारे ऐड किए उसके डिवाइड बाय n कर दिया, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग हियर, आप सिर्फ n से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अच्छा सर वो मैंने n कंसिडर किया था तो आई थॉट The कि mean, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने इसको करेक्ट अज्यूम किसी और को नॉट करेक्ट अज्यूम किया, तो वो भी एक तरह से मिस्टेक है। आपने किसी और को कैसे करेक्ट अज्यूम किया वो भी देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर इज लेस सेंसिटिव टू लार्ज इंडिविजुअल एरर्स देन द रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो हमने क्लास में ये एग्जांपल क्लियरली डिस्कस की थी। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो ज्यादा इफेक्ट Yes, sir. ज्यादा इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू absolute mean absolute error. So this is correct. Mean absolute error is less sensitive as compared to root mean squared error. The average error indicates whether we are under or overestimating the outcome on error. So that's what we discussed as well. कि अगर ये Yes, sir. average error 0 आ जाता है, that means हम underestimate या overestimate नहीं कर रहे, हम सही है बिल्कुल। अगर हमारा ये positive आ जाता है, तो it's the average error is going to be underestimated, और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो ओवर एस्टिमेट। वो डिपेंड करता है आप एरर किस तरह से कैलकुलेट करें। अगर ये प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं पॉजिटिव के केस में और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं नेगेटिव के केस में, ठीक है। So all the other options were correct. This was the only option that was incorrect. Which of the following statements about machine learning terminology is not correct? Again, all predictors in a classification problem can be numerical. So predictors क्या होते हैं? Predictors क्या होते हैं? Anyone? इनपुट होती है, इनपुट इनपुट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपको सारे नाम यहाँ पे हमने दिखाए भी थे। सर ये भी गलत हो गया, इसलिए प्लीज आप ये क्विज आप कैंसिल कर दें। अभी तो सर ने आंसर भी नहीं बताया। All predictors in a classification problem can be numerical. So can be numerical, इसमें कोई इशू नहीं है, that's correct. An unsupervised learning
may contain input variables. So yes, unsupervised learning problem में input variables तो होते ही हैं. Input variables तो supervised में भी होते हैं, unsupervised में भी होते हैं, दोनों में होते हैं. A supervised learning problem may not contain an outcome variable. What ये does गलत this mean? सर, हाँ, ये ये नहीं गलत है होता. सर। ये तो Yes, हमेशा it- होता है. Supervised learning problem के अच्छा, अंदर नहीं, नहीं, outcome तो होती है. दूसरा. That's Yes, the sir. definition of a supervised learning. So this is incorrect. The third problem जो है, third option जो है that. Fourth में क्या? A regression problem always learns a target function with an outcome. So that's the definition of a regression problem कि outcome जो है वो numerical होती है. So that's also correct. So आपकी ये third option incorrect थी इसके अंदर. Supervised learning and unsupervised learning are different because supervised learning requires input attributes to be categorical. Is that the case? Input attributes से variables categorical भी हो सकते हैं, numerical भी हो Yes, सकते हैं, और वो दोनों के अंदर same है. Supervised learning में unsupervised learning में इसका कोई difference नहीं है as such. अच्छा, supervised learning requires at least one input attribute. That's correct. लेकिन unsupervised that also requires at least one input attribute, so that's also correct. So this is not the correct answer. Supervised learning requires output attributes to be categorical. Is that the case? न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं सर. Numerical भी हो सकते हैं. न्यूमेरिकल है सर, सुपरवाइज की तो होती है, न्यूमेरिकल नहीं है. नहीं Supervised का Classification दोनों हो सकते हैं ना. Categorical भी हो सकता है, numerical भी हो सकता है. यस सर. आउटपुट होना जरूरी है. Yes, it requires at least one output attribute, so that's the correct answer. Supervised Yes. learning और unsupervised में यही difference होता है कि supervised में आपको एक output चाहिए होती है, unsupervised में आपका output नहीं चाहिए होती. सर आउटपुट वेरिएबल्स मल्टीपल भी हो सकते हैं. मोस्टली एक ही होता है. जो आप सारे मॉडल्स यूज कर रहे होंगे उनमें एक ही होता है, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं जिनमें आपके पास आउटपुट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, बट तो उसमें किस y होता है और z भी होता है क्या? So I you think could that is more categorical अगर वो multiple values आ गई आपके पास, right? ये Z कहाँ से आ गया? In 3 dimensions. बासित वाई के बाद. Thank you, विशाल. मतलब वो theoretical उसकी जो है वो आपके पास mathematical function इस तरह के होते हैं जिनके multiple outputs होती हैं. लेकिन मशीन लर्निंग में आप जो भी चीजें देख रहे होंगे उसमें आपकी सिंगल आउटपुट ही होगी. जो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं ना, उसमें आपकी आउटपुट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होती हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव a categorical variable जिसमें 4 वैल्यूज पॉसिबल है, तो दैट्स वन वेरिएबल बट इट कुड टेक 4 डिफरेंट वैल्यूज. सर वेरिएबल सर लेकिन यहाँ एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो फिर वो ये लेबल की तरह की बात नहीं हो रही कि लेबल नहीं, these are all different words for variable. Attribute, variable, feature, I told you these are all different words for variables. उसमें कोई difference नहीं है. सर ये वाला जो है लास्ट वाला पॉइंट वो तो सुपरवाइज के लिए ट्रू है ना कि आउटपुट वेरिएबल होना चाहिए, तो Yes. यही तो डिफरेंस नहीं है. Yes, so that's correct. Yes. ओके सही है. Acha, which of the following statements about performance indicators for classification problems is not correct? So again, we're looking for something that's correct. A confusion matrix can be constructed for any number of outcome categories. Yes, that's true. आपके पास हमने 2 by 2 देखा था, 3 by 3 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. That doesn't make any sense. That doesn't make any difference. सर वैसे ये 3 से ज्यादा किस तरह होंगे? सर ये वाला सवाल प्लीज आप जरा डिटेल में समझा दें. अरे 1 So- अगेंस्ट ये ऑल कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? 220 हो भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? True, negative, true, जी positive. क्लास तो बहुत देर से खत्म हो चुकी है. अभी तो सिर्फ जो क्वेश्चंस करें सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड करो. इफ एनीबॉडी वांट्स टू लीव दे आर फ्री टू लीव. सर मैं पूछ रहा था कि ये 3 डायमेंशन से ज्यादा किस तरह बनाते होंगे हम? We as a human have limitations, right? नहीं मतलब ना, जिस तरह ये 2 by 2 का टेबल है, you could have a 4 by 4 table that could look like this. ओके ठीक है.
So you could have, so ये मैंने एक ट्विटर का क्लासिफिकेशन की हुई है, सेंटिमेंट एनालिसिस ट्वीट्स का. So I have 3 categories for neutral. So ये इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा. 4x4 के लिए आपका इसको और इंक्रीज कर दें, 4x4 का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो फिर इनके सेंसिटिविटी वगैरह के फॉर्मूले उसी तरह बन जाएंगे, किस क्लास को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बाकियों को नीचे रख देंगे उसकी रो वालों को. Yes, exactly. So आप सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी इसमें एक कैटेगरी की एट अ टाइम निकाल सकते हैं. सो सेंसिटिविटी ऑफ पॉजिटिव क्लास फॉर एग्जांपल, सेंसिटिविटी ऑफ नेगेटिव क्लास, सेंसिटिविटी ऑफ न्यूट्रल क्लास. तो हर क्लास अलग अलग से आप निकालें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रिसिजन और रिकॉल शो किया हुआ है. दिस इज रिकॉल पॉजिटिव क्लास, रिकॉल फॉर नेगेटिव क्लास, रिकॉल फॉर न्यूट्रल क्लास, एंड सिमिलर प्रिसिजन फॉर ऑल थ्री ऑफ देम. सर इनका फार्मूला डिफरेंट कैसे है? स्पेसिफिसिटी जैसी कोई चीज नहीं होगी ना? वो भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, यहाँ भी हो सकती है. वन वेरिएबल एट अ टाइम यहाँ भी हो सकता है. फॉर्मूला देखें प्रिसिजन में, यहाँ पे क्या हो रहा है. प्रिसिजन इज आउट ऑफ ऑल predictions, or out of all values, out of all observations that are predicted to be positive, मेरे कितने correct है. So that's precision for the positive class. Negative class के लिए भी वही, out of all negative predictions that I'm doing, how many of them are correct. ठीक है. Similarly for neutral, out of all neutral predictions that I'm doing, how many of them are correct. ठीक है. सो हर क्लास का इसमें सेपरेटली निकालते हैं. इज दिस क्लियर? सर यस सर. सर रिकॉल का भी फार्मूला दिखा दें सर, क्लिक करके. आउट ऑफ ऑल, सर सेकंड वाला दिखाएगा नेगेटिव. दैट यस, सो नेगेटिव में आउट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट वर एक्चुअली नेगेटिव, कितनी आपने सही क्लासिफाई की हैं. ओके. और सर एक्यूरेसी का फार्मूला क्या है यहाँ पे? डायगोनल को सम किया इन तीन को, डिवाइड बाय द टोटल नंबर 600. ओके. सो ऑल द करेक्ट प्रेडिक्शंस. ठीक है सर. और कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? ये जो टेबल है, दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ओके. अच्छा, so a confusion matrix can be constructed for any number of outcome categories. Yes, that's true. Sensitivity and specificity, they always add up to 1. What do you think about this? हमने कोई ऐसी condition कोई Say false. Yeah, it's not necessary. You would ideally want both of them to be 100%, them to be 1. Ideally exactly. that would be the perfect classifier. इसमें sensitivity भी जो है वो 100% है, specificity भी 100%. That is possible. Right? तो अगर इधर ऑप्टिमली होता ऑलवेज की बजाय फिर सही होना था. नहीं. ऑप्टिमल भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया यार. तुम एक्स्ट्रा क्लास ले लेना अभी. को सर को क्विज़ का आंसर देना. अब जा सकते. अच्छा. सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इसमें आपकी जो जितनी वैल्यू ये बड़ी होगी, दिस वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 0 to 2, राइट. 0 से लेकर 200% तक जा सकती है ना, बिकॉज दोनों की वैल्यू 0 से लेकर 100% तक है. दोनों को जब आप ऐड करते हैं, इट कैन गो अंटिल 200%. दोनों का सम, you would want the sum to be as high as possible, right? And of course as balanced possible as well. आपके let's say अगर आपके 160% आपके दोनों का सम है, you would want कि दोनों में almost जो है वो similarly divided by 80%. If it's 100% and 60%, it might not be as good as 80% or 80%. So you want it as high as possible and as balanced as possible. The perfect estimator would result in a confusion matrix that is non-zero only on the main diagonal. So what does that mean? So perfect estimator is an estimator that classifies everything correctly. ठीक है? So क्या मतलब, आपके पास ये confusion matrix है, यहाँ पे perfect estimator select किया हुआ है ये confusion वाला. एक मिनट बताता हूँ. perfect estimator क्या होएगा? That only has values here, और ये बाकी सारे यहाँ पे
zeros होते हैं. This would be a perfect estimate, a perfect classifier. That's what it's saying. So that is also correct. ठीक है. So perfect estimator क्या होगा, जिस पर diagonal पे सारे नॉन जीरो हैं. ये फर्स्ट भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट था. हमने कहा कि दिस इज नॉट So ये वैसे नेसेसरी. आपने पढ़ाया था परफेक्ट एस्टिमेटर? परफेक्ट एस्टिमेटर हमने किया हुआ ना कि परफेक्ट क्लासिफायर क्या होगा, दैट क्लासिफाइज एवरीथिंग करेक्टली. इसमें एज एन ऐसी कौन सी बात है? वेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने, मतलब मुझे स्लाइड्स में बिल्कुल भी नहीं मिला था, पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स है स्लाइड्स के अंदर. स्लाइड्स में भी है वैसे, और हमने क्लास में वो एक्सेल फाइल से भी किया. रिकॉर्डिंग में है सर, रिकॉर्डिंग में नहीं. स्लाइड्स कंफ्यूजन में भी मैट्रिक्स उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर है. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की जो स्लाइड है परफॉर्मेंस मेजर्स. दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ओके, ये मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ओके. The accuracy increases when the estimation misclassification rate decreases. So again, if Yes, you go sir. back to this slide, estimation misclassification rate क्या है? In fact, accuracy क्या है? That's 1 minus estimation misclassification rate. तो ये estimation misclassification जैसे बढ़ेगा, accuracy उतनी कम होगी. तो because दोनों का sum जो है, इनका sum 1 होता है. सर एक्यूरेसी का फॉर्मूला वैसे यही नहीं था जो मिसक्लासिफिकेशन रेट का लिखा हुआ है? नहीं, इसका ऑपोजिट है. नहीं, मिसक्लासिफिकेशन में आप ये डायगोनल के अलावा बाकी सबको सम करते हैं. एक्यूरेसी में n11 और n22 आना था. एक्यूरेसी में आप ये अच्छा आपने वो दूसरा डायगोनल आपने किया सम ऊपर न्यूमेरिकल. ये डायगोनल के अलावा बाकी हैं. सो दिस इज द मेन डायगोनल. यहाँ पे टॉप से बॉटम पे जाते हैं, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पे जाते हैं. अच्छा, सो इन दिस केस दिस वाज द करेक्ट आंसर. Which of the following statements is true regarding prediction problems? Again, ये तो काफी सिंपल था. The resultant model is designed to determine future outcomes. That seems reasonable. यही आपका purpose होता है मॉडल बिल्ड करने का कि फ्यूचर में आपने आउटकम्स प्रेडिक्ट करनी है. The second option is resultant model is designed to classify current behavior. That's not the purpose. Current values तो आपको ऑलरेडी पता है ना, तो उसमें तो आपको as in that's not your purpose. आप टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कि कौन सा आपका मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पर्पस तो यही होता है अपने फ्यूचर में वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है. The outcome attribute must be categorical. That's not true. Outcome आपका दोनों उस पर न्यूमेरिक भी हो सकता है, categorical भी हो सकता है. तो ये दोनों तो इनकरेक्ट है. लास्ट टू वैसे ही. So the first option is correct in this one. ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन. सर देखें ऐसे एमसीक्यूज हो तो किसी को कोई मसला नहीं, कोई सवाल नहीं आया किसी का. सर इसके अंदर से एक आप ड्रॉप कर दे सर सारों का. मैंने कर दिया एक ड्रॉप. सो आपके पास टोटल 12 मार्क्स पॉसिबल है. I'll be marking out of 10 in this. तो आप पर अगर आपने 5 करेक्ट किए हैं that's full mark. लास्ट क्वेश्चन प्लीज दिखाइए. लास्ट वाले में एक मसला है. फिर इसमें तो आपने स्लाइड में लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल आउटपुट वेरिएबल होगा, तो हमारे प्रेडिक्शन वाले में तो यही लिखा हुआ है. सर ये तो आप हमें इस पे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आप वैसे ही दे दें. स्लाइड आप देख लें बेशक अभी, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो आउटपुट है दैट शुड बी न्यूमेरिकल आउटपुट वेरिएबल. यही सर, यही मैं स्लाइड देख के कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कि दो आंसर कैसे हो. अच्छा सॉरी, कहां पे? ये प्रेडिक्शन और इन्फेरेंस. स्लाइड 15. स्लाइड 15 पे सर ऊपर ही इतना बड़ा लिखा हुआ है आपने. कहां पे? नीचे सर, नीचे स्लाइड 15 है. ये स्लाइड 9 है. ये नहीं है, 9 नीचे. ये नहीं सर, ये नहीं, ये इससे नीचे ये वाली न्यूमेरिकल आउटपुट. ये आगे लिखा हुआ है आपने न्यूमेरिकल आउटपुट. ओके ऑलराइट. सो ये डिफरेंट टर्म यूज लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, हमने तो होना ही था. नहीं, ये टर्म हमने ये एक्चुअली ये जो प्रेडिक्शन की टर्म है ना, ये दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है. सर यही मैं सोच रहा था कि अब सर ने किस कर दी. सर आप ये कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दें सेपरेट. सो यहाँ पे आप जो है ना, जनरली जब आप इसको
क्लासिफिकेशन को भी आप प्रिडिक्शन ही कहते हैं ना, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सी क्लास होगी। तो आप इसको भी एक तरह से प्रिडिक्शन किसी कुछ कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। तो जनरली जो है ना, आई वुड से जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ना, आप रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन कहते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम जहाँ पे न्यूमेरिकल आउटपुट होती है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जहाँ पे कैटेगोरिकल आउटपुट होती है। लेकिन कुछ बुक्स में उन्होंने प्रिडिक्शन को यूज किया हुआ है फॉर न्यूमेरिकल आउटपुट वेरिएबल। सो यस, दैट्स करेक्ट। सो इसमें जो है आपने अगर ये किया हुआ है, या आपने लास्ट ऑप्शन की हुई है, yeah, I consider both of them correct then. First and last option. Sir, ये सारी quizzes jumbled थी? Yes. Okay. प्लीज आप क्या चीटिंग करने की कोशिश कर रहे नहीं, थे? वही मैं सोच रहा था कि सर की क्विज तो डिफरेंट लग रही है, तो शुरू में मैं कंफ्यूज हो गया था। वो ऑप्शन भी जम्बल्ड है और एमसीक्यूज की नंबरिंग भी जम्बल्ड है। सवाल दिया गया सर प्लीज, चलो वाला बहुत ही लंबा हो गया था। हाँ सही बात है, कंसीडरिंग डिस्ट्रैक्शन थोड़ा मसला हो गया था। सर ये नेक्स्ट टाइम जरा ये जो कंफ्यूजन है, ये जो लास्ट वाला एमसीक्यू में हो गया, ये अवॉइड हो सकती है? क्योंकि सर बिल्कुल, इस दफा भी दोनों कॉन्टेस्ट से अवेयर था, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि यहाँ आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने फिर स्लाइड्स खोली, मैंने कहा यहाँ तो ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल है, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला आंसर लगाया। सेम। Yeah, so that's fine. I'm going to consider both of them correct in this case. First option be correct and this last option be correct. Both of them are correct in this case. सर ये पहले वाले एमसीक्यू पे जरा जाएंगे? Yes. इसके अंदर ये फोर्थ ऑप्शन जरा एक्सप्लेन कर दे। मतलब ये प्रिसिजन एंड रिकॉल आर नॉट सूटेबल, और ये सूटेबल वाला पार्ट, प्रिसिजन एंड रिकॉल वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दे। अगर देने भी ये सवाल तो प्लीज एंटर दबा दिया करें, इकट्ठे बहुत मुश्किल हो जाता पढ़ना। ये मैं कर रहा था, वो उसमें ऑप्शन नहीं आ रही थी गूगल फॉर्म्स के अंदर। यू कैन नॉट डू दिस के वो आई थिंक ऑल्ट एंटर करके नहीं, आई ट्राइड एवरीथिंग, ऑल्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, नथिंग वर्कड। वो फॉर्म गूगल फॉर्म्स के लिए मैंने कोई उसमें नहीं हो रहा था। तो फिर यही ऐसे सवाल ही ना दे। या आई होप्स moderate. Okay, so I might be using a different tool next time for quiz as well, जिसमें timer भी आ रहा हो साथ। I was looking for different options, लेकिन इसका time नहीं मिला मुझे ज़्यादा research करने का। But I might use something else, तो उसमें शायद बेहतर options भी हों। अच्छा, so time आ ही रहा था वैसे। सर अभी थोड़ा simple Google Forms is the only simple thing in this। अच्छा, इस पे time आ रहा था कि इस पे कहाँ पे time आ रहा था? नहीं सर, ऑनलाइन रिकॉर्डर में था। लैब्स आ जाता है कितने देर से रिकॉर्डिंग हो रही, तो वो पता चल ही जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग का टाइम आता है। यस, कैन यूज दैट। ओके, अच्छा, इसमें ओके, सो लेट मी गो टू दैट प्रिसिजन एंड रिकॉल। सो आप जब प्रिसिजन और रिकॉल यूज करने का पर्पस ही ये था कि जब आपकी क्लास है वो बैलेंस्ड नहीं होती। सो रिमेम्बर हमने ये देखा था कि एक आपके पास सबसे बेसिक मेजर है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी आप तब यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ तभी जो है सेंस बनेगी जब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस, जो भी आपके पास क्लासेस हैं डेटा के अंदर, दे आर ऑफ सिमिलर नंबर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास वो वाला केस होता है कि you've got something like this, इस तरह का डेटा है कुछ, जहाँ पे एक क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा है as compared to the other class, तो उसमें it would not be suitable, except बस यहाँ पे ये इस तरह values होती, and here you have values like this, इस तरह से। ठीक है, so you have total 115 वैल्यूज, उसमें से एक्चुअल में आपके पास सिर्फ 5 नेगेटिव वैल्यूज हैं एंड यू हैव 110 पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो सकती है, इवन इफ यू जस्ट प्रिडिक्ट एवरीथिंग टू बी
a positive class. So इसमें मैं ये करता हूँ, let's say अगर आपका इस तरह का कोई मॉडल हो that simply predicts everything to be positive. So what would it look like? It would be like this. इसको 5 करें, इसको 110 करें. अब इस मॉडल की भी देखें. Accuracy is fairly high because but let me change this. Yeah. So देखें इसमें 5 नेगेटिव वैल्यूज थी एक्चुअल में और उन 5 वैल्यूज को ये पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है. सो नेगेटिव वैल्यूज कोई भी सही क्लासिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट स्टिल योर एक्यूरेसी नंबर हियर इज गोइंग टू बी 110 divided by 115. That's a very high number. That's more than 95% accuracy. तो जब आपकी क्लासेस इस तरह से इम्बैलेंस्ड होती हैं, यानी कि number of observations in these classes is not the same या not close to each other, accuracy is not going to be very reliable. इसमें आप या तो ये precision and recall यूज करते हैं या आप sensitivity and specificity यूज करते हैं, और आप ideally you want both of these to be high. So precision के अंदर अगर आप इस मॉडल की अगर आप precision calculate करें, that's true positive, that's this 110 divided by true positive plus false positive. So that's going to be the sum of these two. So इसमें precision जो है वो आपकी आएगी इस केस के अंदर, precision हम यहाँ पे लिखते हैं, that's going to be 110 divided by 115. So that's very high, that's good. लेकिन recall, what about recall? Recall में आपका जो है out of all positive classes, recall तो full होगा. अच्छा recall यहाँ पे full होगा. अच्छा, it's probably not a very good example. Let me change this to this instead. Okay, वहाँ पे positive consider कर रहे हैं. अच्छा, अगर ये होता इसमें, या so आपका मॉडल क्या करे, आपका मॉडल सब कुछ नेगेटिव क्लासिफाई करे. So again accuracy is 110/15 in this case. Accuracy उतनी है, लेकिन आपकी precision कितनी है? Precision is precision तो इसमें है ही कुछ नहीं, और recall is also 0. Precision recall दोनों बहुत low है. That would not make sense here because आपकी accuracy क्या show कर रही थी कि आपका मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन precision recall are showing here that it's actually not performing as well. Similarly, आप sensitivity और specificity भी यहाँ पे find कर सकते थे, and in that case as well, आपकी sensitivity जो है यहाँ पे 0 आ जाती, और specificity जो है वो यहाँ पे that would have been fairly high. That would have been something like 110/110. आपकी specificity यहाँ पे 100% आती, sensitivity 0 आती, तो ये भी आपके balanced results नहीं आ रहे. आपकी एक number 0 आ रहा है, दूसरा जो है वो, so that shows it's not a very good model. Ideally, what you would want is that you would want both of these numbers to be fairly high. So let's say if these numbers were both above 80%, that would be a fairly good model, you could say. सर जैसे ये sensitivity और specificity जो है वो पूरा 1-1 हो सकते हैं, इसी तरह precision और recall भी आपस में independently 1-1 हो सकते हैं. Yes, so basically अगर आप सब कुछ सही predict कर रहे हैं, so let's say if this is like this, अगर आपका perfect model है, divide by 0 हो जाएगा. divide by 0 यहाँ पे किधर होगा? नहीं होगा. अच्छा नहीं, True positive plus 1 नहीं होगा. Yeah, so दोनों केस में 1 आ जाएगा यहाँ पे. Perfect classifier जब भी होगा आपका, तो वो आपकी सेंसिटिविटी भी 100%, सब कुछ 100% हो जाएगा perfect classifier में. ठीक है सर.
मतलब ये भी एड अप टू 1 नहीं होंगे? नहीं एड अप नहीं, वन एड अप नहीं होंगे, वो ओनली एक्यूरेसी एस्टिमेशन एंड मिसक्लासिफिकेशन एरर रेट, सिर्फ वो जो है आप उनका सम 1 होता है इसमें सर। रिलेटेड है, ठीक है सर। यस, कि वो एक 1 is 1 minus the other. Arham, does that clear anything for you? Yes, sir. Thank you. Okay. So I think we should stop here. काफी ज़्यादा हो गया, मेरी भी बस हो गया अब. So let's stop here.